Previous video we had seen regarding what is Parkinson's disease as well as what are the causes of Parkinson's disease. What is Parkinson's disease? It's nothing but chronic progressive disorder which usually causes muscle rigidity, balance, problem in balance as well as in movement. And causes we have seen, like it might be unknown, it might be genetic factor, family history, atherosclerosis, viral infection, atherosclerosis, viral infection, any lack of dopamine, as well as any environmental factors. So in this video we'll continue the class. We'll start with symptoms of Parkinson's disease. So what are the symptoms it might be having? So हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था डेफिनेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज और कॉजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज. डेफिनेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज जैसे कि मतलब क्या होता है, वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो प्रॉब्लम देता है जैसे कि मसल रिजिडिटी, बैलेंस और मूवमेंट में. और कॉजेस हम लोगों ने देखा, ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस होने से, वायरल इन्फेक्शन होने से, या ट्रॉमा होने से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या डोपामाइन कम होने की वजह से हो सकता है. तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सिम्टम्स कि ये इसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसे से क्या सिम्टम्स होगा इसमें जैसे ये पता होगा. सो दैट इज़ यूजुअली अबाउट दिस थिंग. सो नॉर्मली इन दिस, so symptoms usually it is usually symptoms of this disease is usually related to voluntary and involuntary motor function. Okay, symptoms of this Parkinson disease, it is mainly related to voluntary and involuntary motor function. Okay, voluntary and involuntary motor function usually starts on one side of the body. Okay, usually starts on one side of the body. So symptoms of this Parkinson's disease, it is mainly voluntary and involuntary motor function. It usually will be starts on one side of the body. So what are the symptoms that you can see? It is usually they will be having tremor, rigidity, bradykinesia, postural gait, Parkinsonian gait, postural instability. These are the main symptoms that is usually seen in case of Parkinson's disease. That is tremor, rigidity, postural instability, bradykinesia, and Parkinsonian gait. So what tremor? So when we talk about this tremor, so normally the person will be having trembling in finger, hands, arms, feet, leg, but this tremors or this trembling will be seen when the person is in rest. Okay, when the person is in rest, when the person is doing some work, they will not have any kind of tremor. Okay, he will not have any kind of tremor. So that is usually about this tremor. So next is rigidity. So when we talk about this rigidity, stiffness in the limbs and legs, you can see limbs and trunk. Okay, so they'll be having stiffness in the limbs and trunk, which may increase when the person is moving. Okay, when the person is moving. So due to this, what happens? This rigidity causes failure to move. Okay, this rigidity causes failure to move, and also they will be having severe muscle pain. Okay, they'll be having severe muscle pain. So they'll be when they want to write also, they have developed cramps. Okay, they'll develop severe cramps. Okay, they'll develop severe cramp, as well as this rigidity may also make them to difficulty to eat also. This will also make them to difficulty to eat. So that is first is tremor. So next is rigidity. So rigidity is seen in case of in the limbs and trunk. Okay, rigidity is seen in the limbs and trunk. So this is usually what happens. This will be seen when the person is moving. So this makes the person unable to move, and also this rigidity usually causes muscle pain also. This rigidity also causes muscle pain also. So normally due to this rigidity, they'll be having loss of fine hand movements. Okay, they'll be having loss of fine hand movements. So therefore they'll be developing cramps when the person writes something. Okay, they cramp when the person writes something, and also this will make the person difficulty to eat. Okay, this will make the person difficulty to eat. So that is rigidity is usually there. And next is bradykinesia. Bradykinesia, as already have told in the definition, that they will be having slow physical movements. Okay, they will be having slow physical movements. So this will, due to this, what happens, they will not be able to initiate movement as well as complete movement. Okay, they will not be able to initiate movement as well as complete movement. So along with this bradykinesia, they will be having stiffness in the facial muscles. Okay, they will be having stiffness in the facial muscles, due to which they will not be having they will not show any kind of expressions. Okay, they will not show any kind of expression. So bradykinesia, as I already told in the definition, that it is actually slowing of physical movement, so that you should, and along with, they will not be able to initiate movement as well as they will not be able to complete the movement. And along with this bradykinesia, they will be having stiffness in the facial muscles, due to which they will not be able to show any kind of expressions. Okay, they will not be show any kind of expression, which usually gives to expressionless face. Okay, they will usually give this expressionless
face. So that is usually about this bradykinesia. And the next symptom, it is postural instability. Okay, they will not be able to maintain proper posture. Okay, the person who is suffering from this disease, they will not be able to maintain proper posture. Okay, they will not be able to maintain proper posture, and due to this what happens, there is chances that they might fall also. Due to this there is chances that they might fall also. So that is postural instability. Next is Parkinsonian gait. Okay, so next is Parkinsonian gait. So in this, usually what happen in case of progressive individual with progressive Parkinson's disease. Okay, individual with progressive Parkinson's disease, they develop a shuffling walk. Okay, they develop a shuffling walk with sloped position. Okay, with stooped position. Okay, so they develop a shuffled walk with stooped position. So that is usually what happen. They'll not be having diminished arm swing, or they'll not be or absent arm swing. Okay, so that is usually what happen. They'll be having shuffled walk with stooped position, and also they'll not having diminished arm swing or absent arm swing. So that is while walking with the arm will swing the arm, right? So that will be absent in case of person with Parkinson's disease. They will not be doing, arm swing will not be there. Okay, arm swing will not be there in the person with this Parkinson's disease. So due to this what happen, they will be having difficulty to walk or even to start to walk. Okay, they will be having difficulty to walk or even to start to walk. So it is Parkinsonian gait. So these are usually the symptoms, that is primary symptoms that is usually seen. So normally primary symptoms, it is usually seen that it might be due to voluntary and involuntary or involuntary motor function. This affects on one side of the body. So that is usually the symptoms that is usually seen is tremor, rigidity, postural instability, bradykinesia and Parkinsonian gait. तो नॉर्मली सिम्टम्स क्या होता है, वो मतलब वो जो सिम्टम्स इसमें होगा वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मोटर फंक्शन की वजह से हो सकता है, और जो होता है ना एक साइड के बॉडी में दिखाई देगा, एक साइड के बॉडी में ही दिखाई देगा. तो सिम्टम्स जो प्राइमरी सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देगा वो होता है ट्रेमर. ट्रेमर का मतलब शेकिंग होता है उनको, रिजिडिटी मतलब जो रिजिड हो जाता है, और ब्रैडीकाइनेसिया होगा, पोस्टुरल इंस्टेबिलिटी होगा और पार्किंसोनियन गेट होगा. तो ट्रेमर यहाँ पे क्या होता है, हाथों में होगा, पैरों में होगा, और उनके आर्म में होगा, जॉ में होगा, और उनका हेड में होगा. मतलब यहाँ पे जो शेकी मूवमेंट्स होगा, यहाँ पे जो शेकी मूवमेंट्स होगा. और ये जो शेकी मूवमेंट्स होता है ना, वो लोग जब चुप रहते हैं, जब चुप बैठे होते हैं ना, तभी दिखाई देगा, तभी दिखाई देगा. आप लोग कुछ उनको लोग चुप बैठेंगे ना, तो उनको कुछ देना ग्लास है तो उनका हाथ शिवर होगा, मतलब हिलते रहेगा. तो ये जो होता है ना वो तभी दिखाई देगा. और इसके अलावा जब वो लोग कुछ काम करेंगे ना तब ये दिखाई नहीं देता, जब ये लोग कुछ काम करेंगे ना तब ये दिखाई नहीं देता है. तो वो हो गया ट्रेमर. और दूसरा हो गया रिजिडिटी. रिजिडिटी यहाँ पे ना लिम्स और हाथों में, पैरों में और टंक में दिखाई देगा, मतलब ये जो एब्डोमेन एरिया में तो वहाँ पे दिखाई देगा. तो यहाँ पे दिखाई देने से क्या होता है, ये रिजिड होने की वजह से क्या होता है, उनको ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मसल पेन होगा, और वो लोग मतलब अपना मसल पेन ज़्यादा होगा उनको रिजिडिटी की वजह से. और इसमें ना फाइन मोटार मूवमेंट्स नहीं दिखाई देगा, फाइन मोटार मूवमेंट्स नहीं दिखाई देगा. फाइन मोटार मूवमेंट जहाँ पे हम लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं, फाइन मोटर में जहाँ पे हम लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वो उनको मतलब दिखाई नहीं देगा. जैसे मतलब उनको ना नहीं होगा, जैसे कि अगर वो लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो क्रैम्प्स दिखाई देगा, मतलब दर्द होगा उन लोगों को, और जिसकी वजह से ना वो लोग खा भी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग ना खाने में भी उनको तकलीफ होगी, खाने में भी उनको तकलीफ होगी. तो वो हो गया रिजिडिटी. और तीसरा हो गया ब्रैडीकाइनेसिया. ब्रैडीकाइनेसिया मैंने बोला था आप लोगों को डेफिनेशन में कि वहाँ पे मूवमेंट स्लो होंगे, जिसकी वजह से वो लोग मूवमेंट शुरू भी नहीं कर पाएंगे और उसको ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे. इसके साथ साथ उनको फेशियल मसल में भी स्टिफ्स दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो लोग कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाएंगे, जहाँ से उनका एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखाई देगा, एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखाई देगा. और चौथा हो गया पोस्टूरल इंस्टेबिलिटी. पोस्टरल इंस्टेबिलिटी में जहाँ पे वो लोग खुद का एक पोस्टर नहीं, अच्छे से एक पोस्टर नहीं देंगे, जिसकी वजह से वो गिर भी सकते हैं. और पांचवा हो गया पार्किंसोनियन गेट. पार्किंसोनियन गेट मतलब जब डिजीज़ प्रोग्रेस हो गया होता है, जब डिजीज़ प्रोग्रेस हो गया होता है ना, तो उनके वॉकों में चलने में कुछ शफल जैसा होगा, मतलब उनका पोजीशन स्टूप हो जाएगा, और यहाँ पे जो हाथ हिलाते हैं ना चलने के टाइम में वो कम होगा या होगा ही नहीं कुछ ऐसे, जिसकी वजह से वो लोग चलना शुरू भी नहीं कर पाएंगे या उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ यूजुअली अबाउट दिस सिम्टम्स. ये जो प्राइमरी सिम्टम्स ये होता है. So the other symptoms which is also associated with this Parkinson's disease, it is like they'll be having dementia, confusion. So they'll be having dementia, confusion, and also they'll be having anxiety, stress,
anxiety, stress, and also they'll be in depression, constipation will be there, urinary incontinence will also be there, sleep disturbance they'll be having, they'll be having difficulty to swallow because they'll not be able to eat properly, so they'll be having difficulty to swallow, and also they'll be salivating more. Okay, they'll be salivating more, so they'll be salivating more. Then this, they'll be, it's like they'll not have smell, they'll not be having the sense of smell. Okay, they'll not be having sense of smell, that is diminished sense of smell. And also they'll be having increased sweating. Okay, they'll be having increased sweating. Their speech will be quite slow. Okay, the speech will be quite slow. Okay, they'll not be able to talk fastly, they'll not be able to initiate talking fastly, but very slowly they'll be talking. Okay, very slowly they'll be talking. They'll be developing many skin problems, and in case of males they'll be having erectile dysfunction, they'll not be able to they'll be having erectile dysfunction. And also in case of movement, okay, they'll not be having spontaneous movement, will not be there. Okay, spontaneous movement will not be there. Immediately if they want to move something, they'll not be able to move, so that is usually there. And also they'll be having auditory and visual hallucination. Okay, and also they'll be having auditory and visual hallucination. So the main primary symptom, along with primary symptoms, they'll be having other symptoms like anxiety, stress, depression, memory loss, visual and auditory hallucination, constipation, urinary incontinence. Then speech will be decreased. They'll be, in males you can see erectile dysfunction will be there, many skin problems will be there, they'll be having difficulty to swallow, excessive swelling, salivation will be there, sweating also will be more, sense of smell they will be lost, they'll not be having proper sense of smell, they'll not be able to smell properly, posture problem will, movement loss, they'll be having loss of spontaneous movement will be there. So these are the other symptoms that is usually seen along with that primary symptoms. तो जो हम लोगों ने 5 सिम्टम्स पढ़ा था, उसके साथ साथ एक और अदर जो सिम्टम्स होगा, मतलब ये कुछ लोगों में होगा या नहीं होगा या नहीं भी होगा। तो ऐसे जो अदर सिम्टम्स जो होगा ना, उनको ना एंग्जाइटी होगा, उनको ज़्यादा से स्ट्रेस में रहेंगे, ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, उनको ना कुछ याद नहीं रहेगा और कन्फ्यूजन में रहेंगे वो लोग हमेशा, और उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा उन लोगों को, वो लोग खुद से मतलब निकल नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा निकलते रहेगा मुंह से, पसीना भी ज़्यादा निकलेगा उन लोगों को, और उनको मतलब जो मेल्स में होता है ना, उनको उनको ना एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, मतलब उनको मतलब मेल्स में ये ज़्यादा दिखाई देगा। और कुछ लोगों को हैलुसिनेशन होगा, जैसे विजुअल ऑडिटरी हैलुसिनेशन होगा। विजुअल मतलब जो दिखाई, मतलब कुछ नहीं होगा फिर भी लगता है कि कुछ है, मतलब उनको कुछ नहीं बुलाया होगा फिर भी उनको लगता है कि किसी ने उनको बुलाया है, तो वो होगा। और उनके बातों में ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब वो लोग सीधे से बात नहीं कर पाएंगे, स्लोली बात करेंगे, तो ये सब होगा। जो अदर सिम्टम्स होता है वो होता है जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, confusion, memory loss, विजुअल एंड ऑडिटरी में हालुसिनेशन, लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा। उसके बाद स्वेटिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्वालोइंग में प्रॉब्लम होगी उनको, पसीना मतलब ये सलाइवा ज़्यादा निकलेगा। उसके बाद उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी में सब, इसमें ये सब जो होता है ना, ये जो सिम्टम्स होता है ये दूसरा सिम्टम्स होता है। सो मेन सिम्टम्स वही होता है जो 5 मैंने बोला था। सो दिस इज अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। सो रिमेनिंग विल द अदर थिंग विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।